Okay, and these results will help you to see how you can actually track your business. Okay, and I'm going to share that with you of what all need to be tracked, how it needs to be tracked, and what all needs to be tracked. Okay, so thank you very much, everybody, once again for joining in. My name is Dr. Yogesh Pawar. I'm the founder of School of Inspirational Leadership. And for last 10 years, we have been consulting the medium and small enterprises across the country in Middle East and Africa. And as a consulting company, we believe that when you go detailed, when you solve problems, our ability to solve problems, look at things in a more analytical way, we have been able to gain a lot of benefits for the clients that we worked on with. We have certain stories, and before we, you can go to YouTube rather. That's one of the, platforms that a lot of cases have been, video cases have been given, what they did, how they did that, what changes did they make. All of that is there. Please have a spend some time in looking at that. Also, as a consulting company, we firmly believe that when you have right management practices that are aligned to the future of the organization, then the growth is natural in the journey. Okay, very natural is the journey. Now, fundamentally, when we are talking about all this growth is natural, the journey is natural. What are the things that we need to start measuring is what we will talk about now. While we look at our budgets, okay, while we look at our budgets, there are 13 such considerations. While we look in our budget, there are 13 such considerations which are for sustainability of your business. And then we have growth considerations. But in this webinar, I'm only going to talk about the sustainability considerations because we're talking about focus on our budgeting. Now, that takes us to the next part of it. And assuming that you have, I'm just sharing, maybe I'm zooming it up a bit. Please confirm if you can see my slides very well. Please confirm if you can see my slides very well. Okay. Good. Thank you. So the first consideration, say, assuming I am a 10 crores business, I want to reach to 15, 20 crores, 25 crores business. Okay. And what all do I need to plan for? What do I need to look at? How do I need to put in numbers? And once I put in numbers, what should be my mechanism of engagement? What should be my mechanism of what are the rules of engagement? That's what is said, rules of engagement. And more importantly, how do I track my entire business? Okay, so in the next 45 minutes, I will give you a glimpse of how it has to be done. And then if you are really interested in doing it in thoroughly with us, I will invite you for ARAM. ARAM is the annual planning and budgeting exercise that we do yearly. So this is a yearly program that we do, and it starts digitally for 10 days. And of course, 2 days is more physical in nature in the conference. So let's look at the first parameter of it. The first parameter of it, it's called revenue forecasting. Okay. While you say, what are the 13 parameters? I've given all the 13 parameters that you need. Okay. All the 13 parameters that you need. If you have a pen and paper, you can copy it down. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot. No problems with that. Right. Let's look at the revenue forecasting. When I start looking and focusing at revenue forecast, it means set realistic and ambitious revenue targets based on market analysis, sales forecast, and historical data. Now let's look at all, and we will cut this statement into small pieces and let's look at each part of it. Okay. So I'm going to close this for you. So what all do I need in order to do this planning right for my revenue? See, 60%, 50% of your budget is typically your sales planning. Just remember this, sales planning. Sales कितनी अच्छी तरीके से प्लान हो रहा है. सो उसके लिए क्या चाहिए? लास्ट 3 से 5 साल का डेटा चाहिए, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, कैटेगरी वाइज, आपके पास कौन से मटेरियल वाइज आपने भेजा है, ये 3 से 5 साल का डेटा आपके पास
होना जरूरी है एक अच्छा प्लानिंग करने के लिए. सो दैट्स पॉइंट नंबर वन एज अ रिक्वायरमेंट. पॉइंट नंबर टू इज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. So how fast is my industry growing? How slow is my industry growing? At what sector pace is my industry growing? मेरे इंडस्ट्री का CAGR क्या है? ये सारा डेटा गूगल ऑनलाइन पे अवेलेबल है. You don't have to worry about it. And first data is already there in your tally. This is there in your tally. Where do you get this data? In your tally. Okay. Just give me a moment. Yeah. So this is already there in your tally. You don't have to. Just give me a moment, guys. Let me log in. I think I've not logged in into this. So I have logged it into this. Now, if you look at it, the third data, the second data that is required. So when we say this data is already available in your tally. So source क्या है इसका? Tally. Okay. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? कंपटीशन किस तरीके से ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है, नई ट्रेंड क्या आ रही है, व्हाट इज द न्यू ट्रेंड दैट इज देयर इन द बिजनेस, राइट? सो यू नीड टू लुक एट दिस डेटा. सो व्हेन वी से लुक एट दिस डेटा, व्हाट इज दैट मीन? इट मींस अगर आप अपने कंपटीशन को क्या कर रहे हो वो समझ लेगा, उनके प्रोडक्ट लाइन को समझ लोगे, उनके प्रोसेस लाइन को समझ लोगे, तो आपके पास वो डेटा आएगा. इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री है. इफ आई जस्ट गूगल राइट नाउ हाउ इज द ग्रोथ ऑफ ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया, मेरे को ऐसे डेटा आ जाएगा, राइट? एंड देन वी व्हाई इज दिस डेटा रिक्वायर्ड? बिकॉज आपको डिसीजन लेने हैं कि अगले साल में आप कौन सा लीवर कितना खींचोगे, आप सेल्स लीवर कितना खींचोगे, मार्केटिंग लीवर कितना खींचोगे, ऑपरेशंस कैपेक्स कितना करोगे, जिसकी वजह से आपको मिक्स, जिसको रेवेन्यू मिक्स कहते हैं, वो आपके पास आएगा. सो इसीलिए ये डेटा जरूरी होता है, राइट? सो दिस इज वन. लेट्स मूव टू न्यू ट्रेंड्स. तो न्यू ट्रेंड्स में कहाँ चेक करने पड़ेंगे? प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट एक्सपेंशन, सप्लाई चेन. ये चार कैटेगरीज हैं जहां पे आपको नई ट्रेंड्स क्या चल रही है ये आपको ढूंढना पड़ेगा. Okay, so during the RM session, during the budgeting session, we give you more insights on this so that you are able to search better to help build a better AOP. Okay, now जब मैं ये दो तीन तीन चीजें हो गई हैं मेरी, मतलब क्या है? मैंने टैली से डेटा निकाल लिया है. टैली से क्या डेटा निकाला मैंने? कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स बेचे हैं, कौन से कस्टमर्स को बेचे हैं, कौन सी टेरिटरी में बेचे हैं, और मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या थे. ये चाहिए डेटा. ओके. अब ये डेटा रेडिली अवेलेबल है आपके टैली में. आपको कुछ करना नहीं है, बस एक्सट्रैक्ट निकालना है, डंप निकालना है, उसको सेग्रीगेट कर देना, राइट? सो वंस वी हैव दिस, then we talk about classification. Now let's understand, this is very important when it comes to classification. Okay, now what do you mean by classification? There are four classes of customers that you need to map with your products. Okay, four classes. And based on those four classes मुझे marketing plan करना पड़ता है, क्योंकि हर क्लास के लिए marketing के efforts अलग होते हैं, right? So let's look at this. What are the detailed classifications? Let's look at first classification. The first classification is called new product, new customer. I have a new product and I have a new customer. I'm going to that customer for the first time. ऐसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है क्या जो आप नए कस्टमर को बेचना चाहते हो? नया प्रोडक्ट, नया कस्टमर. सो इसका कंट्रीब्यूशन क्या? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ contribution percentage in revenue. Now when we say revenue, कौन से साल का रेवेन्यू मैप कर रहे हैं? हम अगले साल का रेवेन्यू मैप कर रहे हैं. Contribution percentage in contribution percentage in revenue. Okay, similarly ये हो गया पहली कैटेगरी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर. अब इनके लिए करना क्या है? मार्केटिंग चैनल क्या है? मार्केटिंग चैनल इज सोशल प्रेजेंस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज.
इन जगहों पे तो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज कहाँ दिखती है? शायद एग्जीबिशन में दिखती है, शायद आप किसी कीनोट पे चले गए, आपकी इंडस्ट्री के बारे में पार्टिसिपेशन कर लिया, शायद आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए कि बताने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री हम क्या किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट। ओके, गेटिंग न्यू कस्टमर्स इज अ टफ जॉब, राइट? सो नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, सो दैट्स द फर्स्ट जॉब। सो अब देखिए, अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है तो आपको सोशल और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज में खर्चा करना पड़ेगा। सो उसका खर्चा करने से पहले उसकी प्लानिंग कर ले कि भाई सोशल मीडिया पे क्या करेंगे, कितना बजट जाएगा, कितना बजट हम खर्चा कर सकते हैं। सो दैट थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ क्यों करना है ये नए प्रोडक्ट को मार्केट करने। ओके, और ये नए प्रोडक्ट को मार्केट क्यों करना है? क्योंकि नया कस्टमर आएगा। सो दिस इज वन क्लास, दिस इज वन क्लास और वन कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। ओके, now let's move on to the second class. Okay, the second class of customers is called new product old customer. New product old customer, इसका मतलब क्या है? I am going to my old customers, taking a new service, a new product that will add a value to their life. अब मैं, if say assuming we I'm into manufacturing copper. सो कॉपर में आज मेरे पास वो यूटेंसिल्स खरीद रहा है, क्या वो मेरे मेरे से बॉटल खरीद सकता है? राइट, ये पूछना चाहिए। क्योंकि नया प्रोडक्ट बनाते रहूंगा, पुराने कस्टमर को देते रहूंगा, तो सेल्स एफर्ट कुछ नहीं, सर्विस एफर्ट्स है, एंगेजमेंट एफर्ट्स है। तो एक्विजिशन का कॉस्ट आप बचाते हो जब आप पुराने कस्टमर को नया प्रोडक्ट बेचते हो, इसको कहते हैं अपसेल। ओके, सो अपसेल कंट्रीब्यूशन क्या है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द contribution percentage of to revenue? Okay, contribution percentage to revenue. Okay, so while क्लास वन में आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू रेवेन्यू, क्लास टू में आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू रेवेन्यू, क्लास थ्री में भी कैटेगरी है ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड न्यू कस्टमर्स। Old products and new customers, which means I am now taking a good product that is used by people. They have given me feedback. I have delivered it on time. I have collected money. And now I am going to new customers. New customer मतलब क्या है? नया मार्केट हो सकता है पूरा। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जो फूड इंडस्ट्री में चलता है, अब मुझे ये ध्यान में आता है कि फूड के साथ फार्मा में भी चलेगा, तो मैं फार्मा में जाना शुरू करता हूं। तो पुराना प्रोडक्ट है, पर मैं फार्मा में नए इंडस्ट्री में जा रहा हूं, नए कस्टमर के पास जा रहा हूं। सो दैट इज न्यू कस्टमर। दिस एलिमेंट ऑफ जॉब इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन। अगेन, contribution to contribution percentage to revenue, right? This becomes your planning for class 3. अब मार्केटिंग कैसे करनी है? सोशल प्रेजेंस और सेल्स फोकस टीम क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस इन क्लास 4। ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर मतलब रिपीट बिजनेस। ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर मतलब रिपीट बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया? ना मेरा सेल्स एफर्ट है, ना कुछ सेल्स को ये करना है, पर क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द एफर्ट फ्रॉम मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट आई हैव टू गिव? आई हैव टू कीप एंगेजिंग माय ओल्ड कस्टमर्स एंड एजुकेटिंग माय ओल्ड कस्टमर्स। दिस इंप्रूव्स लॉन्जिटिविटी ऑफ द कस्टमर एंड सर्विस। अगर इस ग्राफ को सही, अगर इस चार्ट को हम सही तरीके से देखें, ओके, आई विल ओपन अप एवरीथिंग फॉर यू। If you want to take a snapshot, please take a snapshot. More than happy to. इसको अगर एक स्क्रीन में देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूशन टू। ओके, नाउ यू सी आपका टर्नओवर एक्चुअली चार हिस्सों में बट रहा है। आपके अगले साल का टर्नओवर ये चार हिस्सों में बट रहा है, राइट? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब आपको लगने वाले जो लोग हैं, ओके, आपको जो लगने वाली मार्केटिंग टीम है, ये जो मार्केटिंग टीम, ये जो मार्केटिंग करने की एक्टिविटीज है, ये भी अलग है। और इन मार्केटिंग करने वाली एक्टिविटीज की वजह से आपको लगने वाली सेल्स
स्किल्स भी अलग। ओके, टू गिव यू एन एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच में 10 लोग हैं, somebody, or a football, right? Somebody is a striker, somebody is a midfielder, somebody is a forward, somebody is a backer, backer, right? So or somebody is a goalie. So similarly, your team also needs to be developed in that way, or team needs to be allocated that way. Jaise new product. So I'll just copy this and it is easy, right? Right? If I just paste it here, ये बेचने वाली जो टीम है, न्यू प्रोडक्ट न्यू कस्टमर, अग्रेसिव टीम, अग्रेशन चाहिए। ओके, न्यू प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली टीम चाहिए। ओल्ड कस्टमर न्यू प्रोडक्ट, सॉरी, ओल्ड प्रोडक्ट न्यू कस्टमर, एक्सपर्टीज वाली टीम चाहिए, जिसको प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज हो। एंड ओल्ड कस्टमर, ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, सो स्किल्स आर ऑल्सो चेंजिंग और स्किल्स आर ऑल्सो अलाइंड। अगर आपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले आदमी को नया प्रोडक्ट नया कस्टमर के पास भेज दिया तो सेल्स साइकिल लंबी हो जाती। अगर आपने अग्रेसिव आदमी को यहां भेज दिया, ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर के पास भेज दिया, तो वो अग्रेशन में गलती कर लेता है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर टीम्स अकॉर्डिंगली टू मूव। तो आप देखिए क्या क्या लॉजिक है। यहां हो गया मार्केट, यहां हो गया मार्केटिंग की एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी, और यहां हो गया टीम कैसे लगी। ये सबके लिए पैसे लगने वाले हैं, राइट? सो इसमें सब आ गया, आपके ब्रोशर्स आ गया, आपकी मार्केटिंग आ गई, आपकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग आ गई, सब सब आ गया। और यहां पे आया उन्होंने कैसे बर्ताव क्या करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मैप्ड। Okay. Now, give me a thumbs up if everybody is. How many of you do your sales planning in this format? Please give me an answer on the chat box. How many of you? I'm sipping some tea for myself. Please tell me how many of you plan your sales in this format, or how many of you would want to plan your plan this in this format. Let me ask a question which is more positive in nature, right? How many of you would want to plan it in this process? I see Dharmesh, I see Girish. Dharmesh, Girish, all of you are anyways coming in Aram. Your entire year of sales planning will happen in this form. You don't have to worry about it. Based on that, वो बजट भी लगाने हैं, बस ये भूलना नहीं। क्योंकि प्लानिंग करने के बाद अगर अगर हमने एक्सरसाइज विच इज एग्जीक्यूशन और बजट नहीं लगाया तो वो प्लानिंग की धरी धरी रह जाती है। जस्ट मेक श्योर दैट वॉट एवर यू प्लान इज मोर रैशनलाइज्ड इन नेचर। इसीलिए क्या बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई सेड, दैट इट इज अ realistic ambition. Okay, so that's one. So this is the place where you become certain. अगर ये प्लानिंग तगड़ी है तो आप डिसीजन लेने में डरते नहीं। अगर इन सारी चीजों में आप डीप चले जाते हो तो डिसीजन लेने में डरते नहीं हो। ये सारे मैकेनिक्स आपको बताए और सिखाए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाउ दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय 13 पॉइंट्स कंसिडरेशन इज माय कॉस्ट स्ट्रक्चर। इज माय कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो व्हेन वी से कॉस्ट स्ट्रक्चर, दो तरीके के कॉस्ट है। देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट and there's a fixed cost. There's a variable cost, there's a fixed cost, right? Now variable cost, मेरा ये हमेशा से सारे लोगों को ये मैं हमेशा कहता हूं, कॉस्ट को जितना वेरिएबल रखे उतना कंपनी लीन रहती है। कॉस्ट को जितनी वेरिएबल रखे, अगर हम फिक्स फिक्स कॉस्ट पे ज्यादा हैवी है तो हमेशा प्रेशर में रहेंगे। सो क्या वो तरीके हैं जिससे आप वेरिएबल फिक्स को वेरिएबल में डाल पाओगे। लेट्स लुक एट दिस। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? योर एम्प्लॉइज, योर इलेक्ट्रिसिटी, या सो इस तरीके की, राइट? योर रेंट, योर ईएमआईज, राइट? ये फिक्स, राइट? वेरिएबल क्या होता है? आपने किसी से कंसल्टिंग ले ली, राइट? आपने किसी वेंडर को आउटसोर्स कर दिया माल, राइट? आपने योर स्टैट्यूटरी इज आल्सो स्टैट्यूटरी, या स्टैट्यूटरी इज फिक्स्ड। सो जो भी फिक्स्ड है, राइट?
मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इन सारी आइटम्स को वेरिएबल पे कैसे लाऊं, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, जितना हो रहा है उतना कर रहा हूं, जितना जितना आ रहा है उतना दे रहा हूं। ये मेरी फिक्स लायबिलिटीज हो जाती है। तो असेट लाइट बिजनेस क्रिएट करने का तरीका क्या है, फिक्स्ड को वेरिएबल में लेके जाओ। सो सेल्स टीम की सैलरी है, सेल्स टीम की सैलरी क्या इंसेंटिवाइज की जा सकती है, विच इज द न्यू ट्रेंड बाय द वे इज लो सैलरी हाई इंसेंटिव्स। अब आप कहते हो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूं साहब, ये मैं कर नहीं सकता, नहीं, उसके भी तरीके हैं, आप उसे कर सकते हो, राइट। हम क्या करते हैं, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए पगार देते हैं और इंसेंटिव लाइट रखते हैं, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि इंसेंटिव को हैवी करो, 5-10% इंसेंटिव, क्योंकि कमाएगा तब दोगे ना, दैट इज वेरिएबल। और सैलरीज को कम करो, उसके घर में खाता आना चाहिए कि भाई वो 50-60 हजार रुपए कमा रहे, तो आपके आपके लिए और मेहनत करेगा। सो फंडामेंटली दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे कौन से फोकस करना है, विच इज प्रोडक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओके। अगर कस्टमर ये कह रहा है कि आप महंगे हो, तो दो ही कारण है, आप गलत कस्टमर के सामने बैठे हो या आप सही रेट नहीं लगा रहे हो। आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन अ कस्टमर सेज यू आर expensive, okay, which means you are selling to the wrong customer, or you are pricing to a wrong customer, okay। आपने गलत प्राइस गलत कस्टमर को बता दी, या आपने सेलिंग गलत कस्टमर को कर दी। जब भी कस्टमर रॉन्ग है, उसको हमेशा महंगा लगेगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है, मैं मेरे हाथ में कंट्रोल में क्या है, कि प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या मेरे पास, दिस इज द क्वेश्चन, क्या मेरे पास एक वैरायटी है, ओके। डू आई हैव अ वैरायटी विच इज लो कॉस्ट, लो क्वालिटी, लो कॉस्ट, मीडियम क्वालिटी, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, हाई कॉस्ट, हाई क्वालिटी, हाई कॉस्ट, मीडियम क्वालिटी। अब आप बोलोगे ये हाई कॉस्ट मीडियम क्वालिटी का मतलब क्या है, ओके। ये तो बेचना ही नहीं है कभी, ये तो बेचना ही नहीं है, तो बचा क्या, ये पहले तीन, ये वैरायटी है क्या प्रोडक्ट की आपके पास, जो कस्टमर खरीद पाएगा। नाउ आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट्स, यू डिसाइड व्हाट इज योर हीरो प्रोडक्ट। नाउ बेस्ड ऑन दिस हीरो प्रोडक्ट and what, so I'll make two more things, okay, give me a moment। प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या है, तीन है। पहला कैटेगरी क्या है, योर हीरो प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपकी पेडिग्री डिसाइड करता है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपके मार्केट को ये बताता है कि आप एक्सपर्ट हो। ये प्रोडक्ट क्या बताता है, कि आप एक अच्छे सीरियस काम करने वाला धंधा हो, राइट, योर हीरो प्रोडक्ट्स। सेकेंड कैटेगरी इज योर रनर्स। रनर्स क्या बताते हैं, कि भाई ये इनके इनके पास जब भी मांगोगे ये आइटम मिलेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। ये रनर्स है। और तीसरी कैटेगरी है कैश का। ये कैश काउ क्या है, ये कम बिकता है पर मार्जिन बहुत ज्यादा देता है, ओके। कम बिकता है, मार्जिन बहुत ज्यादा देता है। नाउ इंपॉर्टेंटली, इन इन ये बनाते वक्त, ओके, ये बनाते वक्त वैल्यू वर्सेस एफर्ट को ध्यान दिया जाता है। हाई वैल्यू, लो एफर्ट, हाई वैल्यू,
high effort. Low value, low effort. Low value, high effort. Okay, now why am I sharing this with you? अभी देखो क्या होगा. I'll remove these 5 categories so this becomes easy for you. Okay? अब क्या हो गया? मेरे को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है. कैटेगरी 1. कैटेगरी 2, मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. पहली कैटेगरी है मेहनत, वैल्यू अच्छी मिलती है, मेहनत कम करनी पड़ती है. दैट इज कैटेगरी 1, क्लास 1. क्लास 2 क्या है? हाई वैल्यू हाई एफर्ट. मेरे को वैल्यू भी मिलती है, एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ता है. जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड, कुछ कस्टमाइज प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है. लो वैल्यू, लो एफर्ट. ना मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ना मेरे को उससे ज्यादा पैसा मिलता है. एंड लास्ट इज लो वैल्यू हाई एफर्ट. अब करना क्या इन सब के साथ? इन सब के साथ कुछ एक्शंस लेने हैं. उन एक्शंस का गणित बता देता हूं. हैव अ लुक एट दिस. ये सारे प्लानिंग में होकर करने. आपको कैश फ्लो बचाना है ना, दिस इज हाउ यू गो टू प्लान. ओके, लेट्स लुक एट दिस. कैश फ्लो इंप्रूव करना है, दिस हाउ यू टेक कंट्रोल ओवर योर कैश फ्लोज. ओके, सो हाई वैल्यू लो एफर्ट, इसको क्या करना है? तेजी से मार्केट करो. ओके, ये प्रोडक्ट आपका पूरे मार्केट में छाना चाहिए. इस पे पैसे लगा. ओके, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? यहां जाएगी. राइट नाउ, हाई हाई वैल्यू हाई एफर्ट, इसको स्टैंडर्डाइज करो या ऑटोमेट करो. ऑटोमेटिकली चल रहा है, स्टैंडर्डाइज कर दो, किसी को आउटसोर्स कर दो. राइट. लो एफर्ट लो वैल्यू, किल द प्रोडक्ट और सर्विस. एंड लो एफर्ट लो वैल्यू हाई एफर्ट, अगेन इधर आउटसोर्स इट. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जरूरी है करना, इसके अलावा नहीं करेंगे. एंट्री है कस्टमर की, हमको या तो आउटसोर्स कर दो या तो किल कर दो. उसके बेसिस पे आपके ये प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन होती है. नाउ लेट्स लुक एट दिस. कहां प्रोडक्ट से स्टोरी कहां से शुरू हुई? राइट, हमने स्टोरी शुरू करी कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस से. हमने बोला वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है. फिर बोला सबसे बड़ा हिसाब किताब मेरे प्रोडक्ट पे होता है, तो मैंने प्रोडक्ट को देखा. जब कस्टमर ये बोलता है कि आप एक्सपेंसिव हो, तो दो कारण से. पहला कारण क्या है? आप गलत आदमी को बेच रहे हो या आप गलत चीज बेच रहे हो. गलत आदमी को बेच रहे हो या गलत चीज. जब सही आदमी को सही चीज बेचोगे तो वो खरीदेगा. Is that making sense? Give me a thumbs up if everybody agrees to what I'm saying. Give me a thumbs up if everybody agrees to what I'm saying. If you sell right product to a right customer, he will buy. So दो ही कारण है ना. सही कस्टमर, मतलब गलत कस्टमर को सही प्रोडक्ट. यू आर सेलिंग टू अ रॉन्ग कस्टमर, या तो प्रोडक्ट सही नहीं बैठा. सो फंडामेंटली क्या है? प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं है ना. क्या कौन से वेरिएशंस होने चाहिए? ये 4 तरीके के वेरिएशंस होने चाहिए. कौन सा है? हाई वैल्यू लो एफर्ट, हाई वैल्यू हाई एफर्ट, लो वैल्यू लो एफर्ट, लो वैल्यू हाई एफर्ट. वैल्यू मार्केट से मिलती है, एफर्ट आप लगाते हो. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. इसके अकॉर्डिंग टू जब प्रोडक्ट कैटेगराइज होता है, मार्केट जोरों शोरों से मार्केट करो कैटेगरी 1 को, स्टैंडर्डाइज करो, ऑटोमेट करो, इधर पैसे बचते हैं क्योंकि एफर्ट हाई है. ये प्रोडक्ट को निकाल दो, फालतू का टाइम वेस्ट है वो. The amount of money that you can make year marketing it or automating it, unnecessary wastage है. लोगों को आदत लग चुकी है इसको बनाने की. अपन बोलते हैं चल रहा है ना, चलने दे. वेरी वेरी, क्योंकि पूरा पोटेंशियल एक प्रोडक्ट बनाने में अगर 8 घंटे लगते हैं और आपके पास 10 लोग हैं जिसकी वैल्यू लो है और एफर्ट भी लोगों को आदत लग चुकी है, तो आप समझ लो कि आप पैसा नहीं बनाओगे. राइट. एंड लो वैल्यू एंड हाई एफर्ट इज आउटसोर्सिंग. Okay, now based on this, you have this hero, runners, and cash cows. Now, it is very important to link these products to a place called revenue contribution. देखिए लास्ट में क्या आया, देखिए. ओके, मेरे हीरो प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे रनर का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा कैश काउ का कंट्रीब्यूशन क्या है, और किसको किसको बेचने के बाद कितना आएगा. दिस will help you to do your sales plan. Is that okay? Give me a thumbs up if everybody's understood it.
Give me a thumbs up. Hey, but let me also take a feedback. Uh, Whatever I'm sharing right now, rated from 1 to 5 when it comes to my budget and sales planning. जब मैं sales planning करना चाहता हूँ, rated from 1 to 5. Okay, 1 to 5. क्या ये लॉजिकल दिख रहा है आपको? राइट कि मेरे पास क्या है, तिगड़ी कौन सी चीजों की है, मेरे पास मार्केट है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास टीम है। इन सब के साथ मेरे को पैसा या तो खुद का लगाना है या तो मार्केट का उठा के लगाना है। अगर ये तीन तिगड़ी सही बैठ गई तो मार्केट से पैसा उठाने में मेरे को डर नहीं लगता, इसलिए धंधा कर रहा हूं मैं। राइट? या खुद का पैसा लगाने में डर नहीं लगता क्योंकि क्योंकि वही तो करके मैं आगे बढ़ा हूं। But because this kind of a planning is missing, we are a little fearful about investing our money also and taking money from outside also. Okay. So now that takes us to the next part of it. What is the next part of it? The next part of it is departmental budgets. Right? Let's look at this. कौन से जनरल डिपार्टमेंट्स हम अभी यहाँ पे मैं जस्ट काउंट कर लेता हूँ। हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है। आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस लाइव फॉर यू। ओके, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, वी हैव डिपार्टमेंट्स लाइक एचआर, फाइनेंस, we have departments like logistics and stores, और supply chain typically होता है, right? We have manufacturing if we are in manufacturing. If we are not in manufacturing, we'll have operations. कुछ लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट की टीम होती है, राइट? बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो तीन ही तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास। तीन। एक जो कैश क्रिएट करते हैं, एक डिपार्टमेंट है जो कैश क्रिएट करता है, एक डिपार्टमेंट है जो कैश प्रोसेस करता है, इट प्रोसेस द कैश, एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज द कैश कलेक्शन डिपार्टमेंट। अब हम क्या करते हैं, वी विल जस्ट बाइफरगेट देम। ओके, देखो कैश क्रिएशन इधर सब आ गया, राइट? अब ये डिपार्टमेंट बजट क्या है? तो अज्यूमिंग आई वांट टू गो फ्रॉम 10 crores to 20 crores next year, and I have to make an investment of 6 crores. अब ये 6 crores इन डिपार्टमेंट्स में बांटने हैं उनको काम करने के लिए, राइट? सो सेल्स और मार्केटिंग का बजट कितना होना चाहिए? ओके, सो what is a thumb rule? So that we tell you what are the thumb rules also. In RM, we tell you the thumb rules. Okay. Processing का thumb rule क्या होना चाहिए? Collection का thumb rule क्या होना चाहिए? So we build the thumb rules. Okay. For each department. Okay. And all of this is done on an Excel template. तो ये बताया नहीं जाता है, करवाया जाता है. You are not coming to RM to learn how to do your budget. You are coming to RM to do your budget. In the process, you also learn. Okay. Our intention is not to teach you how to do it. Our intention is to make it happen for you. ओके तो जब आप 20 तारीख को वहां से निकलोगे, तब आपके पास आपके लैपटॉप में आपका साल का बजट है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अब बजट देंगी, वैसे आपके पास आपका बजट है। दैट्स द होल गोल ऑफ दिस, राइट? नाउ इफ यू लुक एट इट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, तो सेल्स में काय का बजट चाहिए? टीम को एजुकेट करने का बजट चाहिए। मार्केटिंग में क्यों बजट चाहिए? सोशल मीडिया पे, एग्जीबिशन पे, वेबसाइट बनानी है, राइट? किसी 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 इवेंट में बात करना है। एचआर में क्या बजट चाहिए? हायरिंग का बजट चाहिए, एजुकेशन का बजट चाहिए, एंगेजमेंट, लोगों को क्या एंगेज करेंगे, रिवॉर्ड रिकग्निशन का बजट चाहिए, कुछ बजट चाहिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या बजट चाहिए? कोई मशीन लेनी है, कोई कोई ऑटोमेशन कराना है, कोई सेमी ऑटोमेशन कराना है, उसका बजट चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट में चाहिए क्या बजट चाहिए? शायद बजट चाहिए कि कुछ नए टेरिटरीज में जाना है, कुछ ईएमडीज देनी पड़ेंगी, कुछ बीजीज देने पड़ेंगी, राइट?
कुछ एलसीज देनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें, राइट। ऑपरेशंस में क्या है, शायद छोटे छोटे टूल्स लगेंगे, कुछ मैकेनिक्स लगेंगे, कोई सिस्टम लगेगी। लॉजिस्टिक्स में क्या है, इन्वेंट्री कितनी स्टोर करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री का क्या बजट रहेगा, रैकिंग सिस्टम चाहिए, ये सब। हर अब फाइनेंस में क्या है, शायद टैली से अलग ईआरपी में जाना है। नहीं, हमको कॉस्ट ऑफ फंड क्या लगेगा, हमको 6 करोड़ चाहिए, तो आज 9% में पैसा आया हुआ है, किस क्या हम इसको 8.90 में ला सकते हैं क्या। सो इनको कुछ बजट देना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दिस, नाउ रिमेंबर व्हाट इज द गेम हियर इज, इनका काम है टॉप लाइन को फोकस करना, मतलब टॉप लाइन मतलब टर्नओवर। ओके, टॉप लाइन को फोकस करना। इनका काम है बॉटम लाइन को फोकस करना, और इनका काम है मॉनिटरिंग एंड डैशबोर्ड्स ऑफ, ताकि वो इनको फीड दे पाए दोनों को, कि भाई किधर जा रहा है किधर नहीं। ये स्कोर बोर्ड वाला डिपार्टमेंट है, अपने को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, नहीं, ये स्कोरर है, जो कुछ हुआ है वो बता रहा है, राइट। पर ये वो टीम्स हैं जो अगर सही से कॉम्पिटेंट है, सही से अग्रेसिवली एक साथ मिलके काम कर पा रही है, तो ये काम सही होता है। इज दैट ओके? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपार्टमेंटल बजट दैट वी सेइंग? गिव मी अ थम्स अप if everybody's understood this. Now, this takes us to the next part of it. The next part of it is risk management. Okay, risk management. Now, जब आप ये सारा प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई होगा रिस्क। नाउ व्हाट इज रिस्क? रिस्क को फिर कुछ ऐसी ऐसी एक्शंस जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो व्हाट डू यू डू इन योर प्लानिंग एओपी? यू either accept this, you avoid this, or you mitigate it. You either accept it, avoid it, or mitigate it. तो इसकी एक्शन प्लानिंग इज पार्ट ऑफ एओपी। ओके, जैसे मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं जो 90 दिन के बाद ही पैसे देंगे, तो मुझे या तो ऐसे कस्टमर्स नहीं लेने हैं, या तो ऐसे कस्टमर्स को अवॉइड करना है, या तो इनके साथ निगोशिएट करके 45 दिन में पैसा लाना है। दैट इज मिटिगेटिंग द रिस्क, राइट। नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू मच अबाउट रेगुलेटरी एंड कॉस्ट कंप्लायंस, बिकॉज हम सब जीएसटी भरते हैं, हम सब टीडीएस भरते हैं, हम सब ईएसआईसी, पीएफ, बीएफ, ये सब भरते हैं, राइट। सो दैट रेगुलेटरी कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम्स फ्रॉम योर सेल्स एंड मार्केटिंग बजट। सो अगर मैं 100 कस्टमर्स लाना चाहता हूं, तो कस्टमर के एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, और जो कस्टमर्स हैं उनको एंगेज करने का कॉस्ट क्या है। इफ यू रिमेंबर, आई हैड रिटन यर कस्टमर लॉयल्टी, तो क्या चाहिए, एजुकेशन और एंगेजमेंट चाहिए, तभी जाके लॉयल्टी बनती है, राइट। सो एंगेजमेंट और एजुकेशन का कोई पैसा लगेगा, दैट कम्स अंडर योर कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन कॉस्ट। फिर है डेट एंड फाइनेंशियल्स, ये भी ऊपर तय हो गया। ये देखिए यहाँ पे कि मेरे को कॉस्ट ऑफ मनी कितना है, पैसा मार्केट से लाना या खुद का पैसा लगाना, कॉस्ट ऑफ मनी क्या है, राइट। दैट इज डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो। ये सब निकलने से आई शेयर यू द टेम्पलेट। टेम्पलेट में कैश फ्लो पूरे साल का आ जाता है, पूरे साल का पीएनएल आ जाता है व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग इट। उसके बेसिस पे आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किस कौन से लोगों के होंगे? ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि इस डिपार्टमेंट ने ये 4 चीजें करनी है, इस डिपार्टमेंट ने ये 4 चीजें करनी है, इस डिपार्ट, और उनके लोगों के इंडिकेटर सेट किए जाते हैं। ओके, नाउ ये तो बहुत बड़ा काम है, बट आप जब शुरू नहीं करोगे तब वहां पहुंचना ही नहीं है। सो द फर्स्ट पीस ऑफ इट दैट वी ऑलवेज रिकमेंड ड्यूरिंग आवर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स आल्सो इज फर्स्ट स्टार्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। ओके, फिर वो अचीव करे नहीं करे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आदत लगाएं खुद को और अपनी टीम्स को कि इस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। नाउ, द लास्ट पार्ट इज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, जो हमने बात करी, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। वर्किंग कैपिटल नीड्स, जिसको कॉस्ट ऑफ मनी में काउंट किया। टैक्स कंसिडरेशन, जिसको ऊपर ऊपर स्टैट्यूटरी में फाइनेंस में काउंट किया, और एक्सपेंस कंट्रोल। सो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये जो प्लानिंग है, ये 3 चीजों की, रादर 4 चीजों चीजों की। ओके, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिपार्टमेंटल बजट्स एंड रिस्क, ग्रोथ का रिस्क, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो रिस्क होगा। सो फंडामेंटली अगर ये 4 चीजें सही प्लान कर ली गई, then your all the rest 13 fall in place. Okay, now there will be few people who will say, oh,
sir, we do all of this and we are fantastic in this. Okay. But we are not growing. क्या है? But we are not growing. ये सारी चीजें कर रहे हैं और ग्रो नहीं हो रहे. इसका एक ही कारण है. Is that okay? I'm just reducing this. इसका एक ही कारण है. That what you are doing is not strategically aligned to the vision of the organization. एक ही चेंज है. अगर स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट है तो आप पैसा उन जगहों पे डालोगे जिन जगहों से आपका गोल अचीव, और वो लगभग 3 साल का होता है. सो द ग्रोथ कंसिडरेशन के पैरामीटर्स विच आई थॉट आई विल शेयर इट लेटर. एक कॉमन पैरामीटर है मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस. क्यों? क्योंकि 3 साल के बारे में प्लानिंग है. कैपेक्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसको एमोटाइज करना पड़ता है. कंपनी अलाइनमेंट विद स्ट्रैटेजी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. 3 साल की रोड मैप होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी क्योंकि आज की इन्वेस्टमेंट आपको इस साल मेहनत नहीं करेंगे. सो ये जो ग्रोथ के कंसिडरेशन है दैट इज डन फॉर नेक्स्ट 3 years. बट फॉर पीपल हु हैव नेवर डन दिस, इस तरीके से धंधे को देखा नहीं है या किया नहीं है या करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए the first goal is to get the sustainable considerations right. Okay. Now, this is the question. How many of you would want to be a part of RM along with us? People who want to be a part of RM, I will discuss the template with them and we can take the conversation forward. For people who feel nahi nahi acha humko nahi chahiye, no problems with that. You can also drop the call. I'm absolutely okay. Even if there are 10 people, I'm ready to talk to those 10 people only. Right? So please write down on the chat box, yes, I want to understand the template. Just write down T, so I'll understand if you want to know the template. Write down T. All right. If you want to understand that, I'm going to ask you to make some payments as advances. Put in. Let's start understanding that. Okay. Let's start understanding that. Can I ask my team to put in there is a booking amount that we take. The RM fee. The RM fee is close to 20,000 rupees plus GST. It's a 2 days physical event plus around 6 days of digital explanation of the template. I'll share the template, that's not a problem. And there is a booking amount that you need to pay for $1,000 to get your seat in the conference. Okay. So my team is now going to, for people who have said this, that they would want to learn the template right now with me, my team is right now sending you the link. You can just book your seat. And as you book your seat, I will start explaining that. I just need the confirmation from the team that you book the seat. I'll start opening and explaining the template to you. If for any reason, after that, you feel कि नहीं मेरे को ये template सब देख लिया मैंने, I don't want to attend, no problems. We'll immediately refund your 999, which is $1,000, right? So the link is on your screens. By the time you're making payments, I will open up the template, and as you just finish, just write on this that I've done my payments. We will make sure that we just confirm, and I'll start explaining. For people who feel कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये हम ये कर नहीं पाएंगे, I am absolutely okay. या तो कुछ और clarity चाहिए. Maybe you need more clarity. Okay, I can ask my team members to give you a call. They will talk to you. After that, if you feel, okay, this is something that I want to do and I want to make it happen in my business, more than happy, you are welcome doing that as well. So go ahead, and if people want clarity, just let me know. I'm just about to open up the screens. Okay, I'm playing a timer right now for all of you.
As the timer finishes, I will be giving you the, I'll be showing you the entire template. Thank you. Thank you, Mr. Ansari. I would also want to share with everybody that this year we will have uh, special guests. Give me a moment. We will have special guests, people who will speak about their failures and successes in the business. They will also be speaking about how my team is just confirming it. If Mr. Ansari has made the payments. For people who are listening to me right now, I'm going to share something with you. How have a look at that entire program. Okay. Uh, Now, what happens is at SIL, we make sure that people learn from each other, right? So it's important that all of us understand that it is important to learn from all of each other. Okay. So give me a moment. I'm just opening up the video for you. Hi, my name is Prajakta and I am from Puja Engineers. We are a Pune based manufacturing company and we are into machining of automobile components. We are into If you see, this is called budget validation. Okay, have a look at this. So I'll quickly move forward. This is called budget validation. Customers will be for the similar lines. Right now, we are in dealing. So here is an entrepreneur who has created his budget, who has displayed his numbers, and he is talking to the budget mentors and explaining them why he has done that. And budget mentors are asking questions. This happens for almost everybody. Okay. Why? Because we want to validate those budgets, whether you've done things right or wrong. Okay. So this is how it happens. Ball, black ball, and butterfly ball. So in that only new product lines, because there are many things which just a few tweaks and tweaks of the processes we can develop. So we'll be hiring a new product and process manager. Now, do you see the template? Do you see the template? It's an Excel template, which is completely automated, whether you are a trading business, project business, whether you are a manufacturing business, it is completely automated. And while you do all of this, okay, development personnel, you already have us from last 20 years, so you start getting feedbacks. I'll just share with you. Parameter is like 50%. So we'll be going from 61 crores to around 90 crores. At the 10:30 that meeting, everything is communicated. So we try to attend that meeting also in case we have to take a gist of what is happening. So yeah. When you get ECG conducted, straight line means what? Yeah. There are many straight lines in your exercise, so, which basically shows that we were busy doing Excel calculations, but we have not thought the practicality. Okay. So you need to rework and ensure that all the practicalities are put into place. So that's the suggestion.
from the profit, because we can only ask one question, from the profit that you will make extra, one, how much percentage of that you will contribute to some cause which can help others, because you are making more money, so at least give it back to people, because if you give it back, you will earn more. Is a question for you to reflect on, not to answer. If you don't want to answer, that's fine. And can I answer that now? Yes. So about our social background, so all we three are socially active. We have, apart from the company's expenses, I would say, we have around 10 to 15 children which we have taken, as a from orphanage. And again, every month we have something or the events or some going on. I am developing a self-sponsored community application for my internal community, which will help in finding jobs, searching jobs, or finding the right people. So it's a full-fledged ecosystem calling AV Connect, and then their cultural program, whoever wants to dance and everything. But again, figures I would say 12 to 15% I will focus more. That is not accounted here properly. We are donating, but we will ensure that it all comes as is. Excellent and inspiring. Thank you very much. Thank you. Thank you. We done with the questions? Wonderful. So what's the number? What is the number? 91 crores. All right. Okay. Yes. One question. Last question from Srinath. What is your share of business as of now? Our share of business from the whatever market you are serving. Okay. I would say around 10 to 15%. I think you should. I have to study that. Yeah, I study that. Yes, then you know what potential you have. Sure, in sir. the same product. Sure, sir. Sure. Thank you. One question even I just add as a finance expert. So what I have seen in last 3 years is that they are top customers. They are more dependent on top customers and top suppliers. So 65% of their entire volume is of 10 customers, not that top 10 customers. So they need to little focus more, which I advise personally do. But so that's expansion and the more they Correct. they can Repeat this. All right, okay, here you go. And people who intend to join in, I am going to share the template with all of you now. And this is how the template look like. Just give me a moment, I'm sharing it with you. Okay, it consists of your basic parameters, your basic things of your company. It is considered, there are 17 basic assumptions that we consider, and we'll let you know how to fill that up. Your number of days of production, if you are in production, production capacity utilization, selling price of the main products, purchase price, increment, increment month, new investments, CC limit utilization, rate of interest, inventory holding, all of this data is, so we help you build it during your digital session, okay? Then there are such 21 considerations that we take in place, whether we are going to do something about it or no, okay? So there is yes, no. These are the levers that we will push when it comes to budget. That takes us to the OPEX planning, supply chain planning. How is it going to, what process it's going to be, what is the weakness and what is the improvement going to, or cost ka improvement kitna hoga, right? So whether it's supply chain, it is manufacturing, it is quality, right? Anything, whether it's design and development, innovation and continuous improvement, okay? In case any doubts, you can definitely ask us, no problems. This is automated sheet, you don't have to do it. So charts will be automatically placed based on my P&L. ये देखिए, ये जो आप डिपेंडेंसी है आपकी बार बार इस डेटा से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे या किसी अकाउंटेंट पे, ये पूरे साल का कच्चा चिट्टा आपके सामने आ जाता है, ओके? सिमिलरली योर पीएनएल गेट्स क्रिएटेड, राइट? सो लास्ट ईयर का पीएनएल, इस ईयर का पीएनएल, सो 24-25 मतलब लास्ट ईयर, this year is 25-26 from April, right? So दोनों P&Ls आपके सामने हैं. फिर हम देखते हैं सेल्स का क्या प्लानिंग है, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे. मटेरियल का क्या प्लानिंग है, एचआर का क्या प्लानिंग है. तो लोग बोलते हैं कि सर हम इतना प्लानिंग नहीं कर सकते.
हम इतना प्लानिंग करना नहीं जानते. That is the right statement. Please don't mind. And with lot of humility, I'm saying this. हम जानते नहीं है कि कैसा करना है, इतना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता. Okay, because these are practices that are used by all major good companies who are growing. Okay, फिर overheads क्या है, capex क्या होगा, कोई फैक्ट्री एक्सपेंशन का प्लान है, कुछ एक्सपेंशन का प्लान है, तो एक्सपेंशन का शेड्यूल क्या होगा. All of this gets converted into your entire year's balance sheet, P&L and cash flow. This is the cash flow that you require, and this is your balance sheet. ये सारा डेटा आज जो 0 आपको दिख रहा है, वो आपके साथ भर के by the end of 20th evening you have this sheet ready, जो आप बनवाते हो अपने सीए से, वो आप पहले ही बना दोगे और उसके अकॉर्डिंग टू धंधा चलाओगे. Okay, so this is how you control your money. This is how you control your money. Okay, just remember this. If your money is not on an Excel sheet that is plotted right, you are losing money every day. So it is a choice that you have to make now, whether you would want to make sure that you are wanting to control your cash flows and taking efforts to do that, or you want to listen and you want to say, okay, ठीक है, चलेगा, हमको समझ में आ गया, हम करने की कोशिश करते हैं. अगर करने की कोशिश होती तो आप कर लेते. शायद कोशिश करते करते अब उस पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. अगर सही में ये चीज करनी है, once come to RM and see what is the magic that we build for every business owner. Thank you very much, everybody, for joining in, for listening to me. I showed you everything that was possible in 1 hour. The budget RM sessions have already, the pre-budget RM sessions have already started. One batch is completed, second batch is starting, on third. So you can start working on your pre-RM, pre-budget sessions. Okay, so welcome to RM. If you wish to, it's a 20,000 very small investment that you can make to make sure that your entire year is planned well on numbers, right? Not about karenge marenge vande mataram, but numbers. Okay, so Excel template, Sirajuddin, Excel template, yes, of course, Excel template will be given to you. There's no doubt about it. Excel template will be given to you. All these Excel templates, all the tools that I'm talking about, all will come to you. There's no doubt about it. Okay, so thank you very much. This was the Excel template that we were sharing with you, and this Excel template will come to you if you've now registered, you've made the payments, so it will come to you on your email. My team will talk to you. They will send the template to you, but don't start filling it off. Once you start sitting the pre-RM budget, once you get the explanation for it, then you start filling it off. All right, so thank you very much, everybody. God bless and happy planning. Thank you. का सेशंस लास्ट 1 महीने से अटेंड कर रहे हैं. डेली मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन डेली अटेंड करते थे, और उसमें से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला जो हमारे बैक एंड में भी नहीं था कि ये हमें करना चाहिए ग्रोथ के लिए कंपनी के. वो सेशंस बहुत ही इंटरेक्टिव था और बहुत ही नॉलेजफुल थे. जैसे कि योगेश सर ने हमें बहुत मीन्स हमें ही नहीं कि सब एंटरप्रेन्योर को बहुत हेल्प किया है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे कौन सा भी एक बिजनेस होगा उसको कैसे देखना है, उसको कैसे ग्रो करना है. उसी हिसाब से फाइनेंस टीम भी हमें हेल्प किया, जैसे शिव सर ने हेल्प किया है, जैसे एचआर के सर है उन्होंने भी हेल्प किया है, सेल्स में मदन सर, अक्षय सर, उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया है. और ये बजट का हमारा सेशन आज का जो शीट कंप्लीट हुआ है वो सब 1 महीने का हेल्प है, और सब सपोर्ट एसआईएल टीम का सपोर्ट है. और हमारा आज का बजट पूरा हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यस वी कैन डू इट बिकॉज ऑफ एसआईएल. थैंक यू एसआईएल, थैंक यू वेरी मच.